अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी एफएससी में सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि पास्ट बोर्ड पेपर्स से मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी भी आपने पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन शॉर्ट क्वेश्चंस की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा ताकि अगर ये आए तो आप इनमें ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर करें इंशाल्लाह। तो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, सोडियम, सिलिकॉन एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल बट दे हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, वाई? 3 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम +2 यानी बेरिलियम का +2 का ये जो कैटायन बना हुआ है कैन हैव 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्सप्लेन हाउ B+2 is associated with 4 water molecules. What is ligand? Give an example of a tridentate and a hexadentate ligand. How are chromate and dichromate ions interconverted to one another? Write balanced equation to show this interconversion and mention the color change during this interconversion. State and explain the Markovnikov's rule. What are optical isomers? Draw enantiomers of lactic acid. अच्छा, अब हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स यूजिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ए पार्ट है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और बी पार्ट है एसिटिक एसिड। एक्सप्लेन द एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। राइट द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शन ऑफ 2,4-D and pH with following compounds: acetaldehyde, acetone. What is Fischer esterification? Give an example. Write the name of an ester used as orange flavor. फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है और ये थर्ड स्ट्रक्चर है। आपने इनके नेम्स बताने हैं। हाउ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू इट्स साइक्लिक फॉर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग इनहिबिटर्स, लिपिड्स, saponification. Which functional groups are used as chromophore and oxochromes in azodides? Give name of 2 azodides. Give the composition of following cosmetics: nail polish remover. Write the sources and environmental effects of following pollutants: ozone, pan. C part है oxides of sulfur. फिर शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लेदर टैनरीज इन वाटर पोल्यूशन? व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी कॉज्ड बाय दिस पोल्यूटेंट? हाउ कैन वी कंट्रोल दिस पोल्यूटेंट? व्हाट इज कंबस्शन एनालिसिस? गिव इट्स ड्रॉबैक. व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर? हाउ वेरियस आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर. और कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं पास्ट बोर्ड पेपर से डिस्कस कर रही हूँ और वो हैं, वाई द सॉल्ट्स ऑफ लिथियम आर स्लाइटली कोवलेंट वेयर एज दोज ऑफ अदर एल्कली मेटल्स आर आयनिक. वाई द टेट्राहेलाइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट हाइड्रोलाइज्ड वेयर एज दीज ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड. राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ, ये जो कंपाउंड पूरा बना हुआ है, with NH3 CO3-2 SCN-. What is DD transition? How is it responsible for the color of transition metal complexes? Write down 3 differences between DNA and RNA. What is the storage polysaccharide? Describe its types. What are the wet dyes? How are they used? Give an example. Write down 3 harmful effects of acid rain. Describe the role of chlorofluorocarbons in destroying the ozone layer. Write down 2 differences between CW NMR spectrometer and FT NMR spectrometer. Write down 3 reasons which give the importance of functional groups for the organic compounds. Write down the mechanism for the electrophilic nitration reaction of benzene. Write down any 2 differences between structural isomerism and stereoisomerism. How will you prepare ethyl amine from an alkyl halide, a nitrile and an amide? Write down any 3 differences between E1 and E2 reactions.
How is phenol prepared from aniline chlorobenzene? Give the reactions of the following alcohols with a mixture of K2Cr2O7 and H2SO4. A part है 2-propanol और B part है 2-methyl-2-butanol. How does acetone react with diluted NaOH, HCN, NH2, NH2? और A part है NaOH, B part है HCN, C part है NH2, NH2. Write down the mechanism of acid catalyzed nucleophilic addition of HCN to acetaldehyde. Give the reactions of acetic anhydride with H2O, C2H5OH and NH3. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.